Hello everyone. This question appears in Class 7th NCERT Chapter of Perimeter and Area. This is ninth question of its exercise 11.4. So the question says that the adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Find the area of the whole land. So area of the whole land is equal to कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल सो L इंटू पी इज इक्वल टू हमें गिवन है 10 मीटर एंड 5 मीटर सो 10 इंटू 5 is equal to 50 meter square. Then second, the area of flower bed. So area of flower bed. So flower bed हमारे पास एक सर्कुलर बेड है. सो फ्लावर बेड हमारे पास सर्कुलर शेप्ड है. सो एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 एंड रेडियस गिवन है हमें 2 मीटर. सो इनटू 2 स्क्वायर सो हो जाएगा 3.14 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 and 4 1 जा 4 plus 1 5 and 4 3 जा 12.56 meter square. Then third, area of the lawn excluding the area of the flower bed. So area of the lawn excluding flower bed ये हो जाएगा हमारे पास 50 minus 12.56 कंप्लीट होल लेंथ का एरिया माइनस फ्लावर बेड का एरिया से हो जाएगा 37.44 meter square. Then fourth, the circumference of the flower bed. So circumference of flower bed is equal to 2 pi r. So there are 2 into 3.14 into radius हमारे पास 2 meter. So into 2 is equal to 4 into 3.14 is equal to 12.56 meter. Thank you.